हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्वेस्ट में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 25 देखेंगे। पहला वर्ड है थैंक यू, जो कि फ्रेजोग्राफ है। हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्वेस्ट में। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 25 देखेंगे। पहला वर्ड है फ्रेज थैंक यू। जब भी हम फ्रेज लिखते हैं तो हम दो वर्ड के बीच में हाइफन लगाते हैं। तो थैंक यू के बीच में हम हाइफन लिखेंगे, थैंक यू फॉर द नोटिस ऑफ द affair on Saturday, the 6th full stop. I shall be with you early, comma, and if I may, I will carry you back to the city to lunch, full stop, unless you have a desire to go to the Royal Hotel, comma, I should like to take you to the usual cafe to lunch, because the meals always seem to be both dainty and cheap, full stop. I wish you were ready for the visit to Sicily, full stop. These lovely days make us long to be away, full stop. I think the change itself would be
likely to make you enjoy the peace of the village life when you got back. Full stop. Those of us who have had such a change of scene know this to be likely. Full stop. I shall be ready to leave as soon as you, comma, and it is for you to name the date. फुल स्टॉप। ये थी एक्सरसाइज 25। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लिख देना। थैंक यू सो मच।